Assalamualaikum students. Let's learn chemistry with Mir Sajad, your chemistry teacher. Today we are going to discuss about the identification of acids, bases and salts. हमने एसिड्स और बेसिस जो है उनकी केमिस्ट्री एक्सप्लेन किया ऑलरेडी जो हमारी प्रीवियस लेक्चर्स थे. बट आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं. अगर हमारे पास डिफरेंट मटेरियल्स होंगे हम उन मटेरियल्स को कैसे ग्रुप करते हैं इनटू एसिड, बेस और सॉल्ट. For that, let's first of all explain some tests which can be used for the identification of acids, bases and salts. पहला ही जो टेस्ट है that is litmus test. Litmus test, as you know that litmus has two types. One is red litmus, another is blue litmus. And acids are those substances which turns blue litmus into red, whereas bases are those substances which turn red litmus into blue. और जो salts होते हैं they neither turn red litmus into blue nor they turn blue into red, so they have no action on the litmus. Now, second test for the identification of acids, bases and salts is the phenolphthalein test. Phenolphthalein is also an indicator which is used to identify the acid and base. In this test, acids do not change their color on adding phenolphthalein. When we add phenolphthalein indicator to an acid, there is no change in the color. So acids do not change color when on the addition of phenolphthalein, whereas bases turn pink by adding the phenolphthalein. So bases are those substances which turn pink on adding the indicator that is phenolphthalein. Now let's observe these tests, that is litmus test and phenolphthalein test, on some common household substances like lemon, like soap solution, like vinegar, like baking powder and like sodium chloride. So हमारे पास यहाँ पे कुछ materials हैं. अब हम उन मटेरियल्स को क्लासिफाई कर देंगे इनटू एसिड, बेस और सॉल्ट ऑन द बेसिस ऑफ लिटमस टेस्ट एंड फिनोल्फथालीन टेस्ट. इस टॉपिक की थ्योरी हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन की है. अब मैंने सोचा कि क्यों ना हम इस टॉपिक को एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन करें, क्योंकि साइंस इज द सब्जेक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. सो मैंने अपनी ओर से एक छोटी सी कोशिश की है. नाउ स्टूडेंट्स, पहले मैं अपने कुछ मटेरियल जो मेरे पास है और इंडिकेटर्स पहले मैं वो आपके सामने पेश करने जा रहा हूं ताकि आपको पता चले कि हम कैसे ये टेस्ट दैट इज लिटमस टेस्ट और फिनोल्फथालीन टेस्ट परफॉर्म करें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज लेमन. एज यू नो दैट लेमन कंटेन्स एन एसिड दैट इज साइट्रिक एसिड. सो हम परफॉर्म करेंगे लेमन पे ये टेस्ट कि लेमन वाकई एसिडिक है या ये बेसिक है या ये साल्ट है. एंड सेकेंड वन, इन दिस बाउल वी हैव पुट our common salt or table salt, that is sodium chloride. So it is sodium chloride salt, and in this bowl there is the sodium bicarbonate, that is baking powder, जो हम घरों में यूज करते हैं बेकिंग पाउडर. इट्स अ बेकिंग पाउडर. सो हम इस बेकिंग पाउडर पे भी अब टेस्ट करेंगे कि ये एसिड है या बेस है या साल्ट है. एंड सिमिलरली दिस इज ए कॉमन हाउस होल्ड प्रोडक्ट दैट इज विनेगर, जो हम अक्सर पिकल्स बनाने में यूज करते हैं. हियर इन दिस कंटेनर इट इज अ वॉशिंग पाउडर. Washing powder, as you know, it's a detergent. So we will perform the litmus and phenolphthalein test also on this washing powder. So these are our materials on which we will perform the litmus and phenolphthalein test. अब हमारे पास कुछ indicators भी है. For example, this indicator, as you know, is the litmus. It is the blue litmus paper. So we can use this litmus paper for testing acid and base. So it's a blue litmus paper. And second one, and this is our red litmus paper. It's also an indicator which is used to test acid and base. So we can also use this red litmus paper for testing acid and base. Now this solution is phenolphthalein solution. It's an indicator. We can test whether the substance is acid or base by the help of this phenolphthalein solution. Besides this, there are two other solutions, two other indicators. One is the litmus solution red and another is the litmus solution blue. So now be ready for experimentation. So पहले हम लेमन लेंगे. So this is our lemon. Let's cut this lemon. अगर हम इस लेमन को कट करेंगे, this lemon contains a juice. So हम इस लेमन को थोड़ा सा हम इस लेमन से थोड़ा सा जूस निकालेंगे. So this is the citric acid present in the lemon. So this is our citric acid in this glass. Now हम इस citric acid पे अब इस लेमन के जूस पे अब लिटमस टेस्ट परफॉर्म करेंगे. ये रेड लिटमस हम इसमें पुट करेंगे. दिस इज आवर रेड लिटमस. यू कैन सी इट. इट इज द रेड लिटमस पेपर. नाउ अगर मैं रेड लिटमस पेपर इसमें पुट कर रहा हूं इस
लेमन जूस में फॉर सम टाइम, देयर इज नो चेंज इन कलर। आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, जैसा ये पहले था वैसा ये अब भी है। सो देयर इज नो चेंज इन कलर। हम ये ऐसे ही रखते हैं ये पेपर। सो देयर इज नो चेंज इन द color of red litmus when put in the lemon juice. Now we will perform. Now this is our another litmus, that is blue litmus. अब हम lemon juice का effect देखेंगे on blue litmus. So let's put out the blue litmus. Here you can see it is our blue litmus. Now अगर मैं इस blue litmus को lemon juice में put कर रहा हूँ, for some time we will observe the change in color. You can observe this. देखो, it has turned red. आप ये देख भी सकते हो, पहले जो ये था it was blue, अब इसका कलर little reddish हो गया है. So we can say that this lemon juice is acidic in nature because हमने यहाँ पे पहले ही explain किया था acids turn blue litmus into red. हमारे पास blue litmus था, हमने acid में डाला, it turns into red. Whereas हमने इसी acid में red litmus डाला था. There is no change. So we can simply say that acids are those substances which turn blue litmus into red and do not have any effect on the red litmus. So this lemon juice is an acid. Now students, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला कि litmus के अलावा मेरे पास litmus की solutions भी है, red litmus और blue litmus. So अब मैं इसकी validity चेक करने के लिए इसको ब्लू लिटमस सोल्यूशन भी ऐड करता हूं कि मैं देखूंगा कि वेदर दैट ब्लू लिटमस सोल्यूशन टर्न्स इनटू रेड और नॉट. सो ये हम मेरे पास ब्लू लिटमस सोल्यूशन है. यू कैन हियर सी इट्स द ब्लू लिटमस सोल्यूशन. अगर मैं इस ब्लू लिटमस सोल्यूशन को इस लेमन जूस में ऐड करता हूं, विल इट टर्न इनटू रेड? आई एम पुटिंग द ब्लू लिटमस इनटू दिस लेमन जूस. You can here see the change in the color. आप देख सकते हो. It has turned into red. आप देख सकते हो ये लेमन जूस जो पहले colorless था, now it has changed into red. So here we can say that this lemon juice is an acid because it turns blue litmus into red. So हमने लेमन जूस पे अब लिटमस टेस्ट परफॉर्म किया और लिटमस टेस्ट से हमें ये प्रूव हो गया कि लेमन जूस जो है it is an acid. हम इस पे फिनाफ्थिलीन टेस्ट भी अब अप्लाई कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम फिर से एक लेमन लेंगे, इफ वील कट दिस लेमन, सो अगर हम इससे जूस निकालेंगे, लेमन जूस, so we have extracted the lemon juice from this lemon. So अब मैं इस लेमन जूस पे फिनाफ्थिलीन टेस्ट अप्लाई कर रहा हूं. Acids are those substances which do not change their color on adding phenolphthalein. So हमने पहले ही देखा कि this lemon juice is an acid. So on adding the phenolphthalein there should be no change in the color. So हम इसमें phenolphthalein अब ऐड कर रहे हैं. So there is no change in color on adding phenolphthalein. जैसा ये पहले था वैसा ही रहा. So hence we can say that this lemon juice is an acid because it turns blue litmus into red. And second one, there is no change in the color of the lemon juice on addition of phenolphthalein indicator. So we can here write down that this lemon juice is an acid. So lemon juice is an acid. अब हमारा second material जो है that is soap solution. So lemon अब हो गया, अब हम soap solution पे आते हैं. जैसा कि मैंने पहले ही बोला, this container contains the washing powder, that is a detergent. So now we will have the litmus and phenolphthalein test of the detergent. Let's make the solution of the detergent. Let's make the solution of the detergent.
I am making the solution of this detergent. So now this is our detergent solution. अब हम इस detergent solution पे टेस्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस detergent solution में blue litmus डालता हूँ. So I will test the blue litmus. So this is our blue litmus. I will put it in the detergent solution. आप देख सकते हो कि मैंने डिटर्जेंट में ब्लू लिटमस डाला था. इट रिमेन्स ब्लू. सो देयर इज नो चेंज इन द कलर ऑफ ब्लू लिटमस. सो ब्लू लिटमस डू नॉट चेंज इट्स कलर इन द डिटर्जेंट सोल्यूशन. अब मैं इस डिटर्जेंट सोल्यूशन पे रेड लिटमस डालता हूं. दिस इज आवर रेड लिटमस. नाउ मैं रेड लिटमस इसमें डाल रहा हूं डिटर्जेंट सोल्यूशन में for some time. Now observe the color of the red litmus. पहले ये red था, अब क्या हो गया? Blue. So hence a substance which changes red litmus into blue acts as a base, जैसा कि आपको पता है. So therefore we can say that the detergent solution is a basic solution. So detergent जो है it is not acidic solution, it is basic solution. So ये हो गया litmus test on the detergent solution. हम detergent के basic nature को ज्यादा validate कर सकते हैं by using the red litmus solution. For example, अगर मैं red litmus solution इसमें add करूंगा whether not. So this is our red litmus solution. I am putting this red litmus into the you will here check it. It's turning blue. अब देख सकते it is turning dark blue. So it has turned a dark blue. So we can say that by adding the red litmus, it is red. By adding the red litmus in the detergent solution, it turns into blue. So therefore, we can say that this detergent solution is a base. So ये था litmus test on the detergent solution. अब हम इस detergent solution पे phenolphthalein test perform करेंगे. Let's make the detergent solution. So this is our detergent solution. अब हम इस पे phenolphthalein test perform करेंगे. Now let's put some drops of phenolphthalein in this detergent solution. देखो, you can here observe we are adding the drops of phenolphthalein indicator on the detergent solution and it is turning into pink. What a beautiful color of pink. You can here check it. This is the beauty of chemistry. So phenolphthalein indicator turns the detergent solution into pink. So hence any substance which turns pink on addition of phenolphthalein solution acts as a base. So this was about the detergent solution, and the detergent solution is basic in nature. So soaps and detergent solutions are basic. So अब हम एक और टेस्ट करेंगे. Common kitchen product. It is used for making pickles. अब हम इस vinegar की property देखेंगे whether it vinegar is an acid or a base. So let's perform the test, that is litmus and phenolphthalein test on the vinegar solution. This is vinegar solution. Now this is our vinegar solution. Let's perform the litmus test. पहले blue litmus में डाल. So this is our blue litmus. When this blue litmus is put in the vinegar,
फॉर सम टाइम इट टर्न्स इनटू रेड। आप देख सकते हो थोड़ा बहुत ये रेडिश हो गया, पहले ये थोड़ा ब्लू था, अब ये थोड़ा रेडिश हो गया। सो बाय पुटिंग द ब्लू लिटमस इनटू द विनेगर सॉल्यूशन इट टर्न्स इनटू रेड। अब हम इसमें रेड लिटमस भी देख सकते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ विनेगर ऑन द रेड लिटमस। This is our red litmus. You can here check it by putting the red litmus into vinegar. There is no change in color. ये पहले भी रेड था, अब भी रेड ही रहा. So therefore vinegar has no effect on the color of the red litmus, and whereas it has the effect on the color of blue litmus. So this vinegar is an acid. So vinegar is an acid by the help of litmus test. Now, in order to explain the acidic character of this vinegar, we can also validate it by help of the blue litmus solution. So, this is our blue litmus solution. अगर हम blue litmus इसमें अब डालेंगे, देखते हैं what is the effect of that vinegar on blue litmus solution. We are putting the blue litmus solution drop by drop. It's the Dear students, you can here check the color of vinegar. पहले ये बिल्कुल कलरलेस था, जैसा कि आपके किचन में होता है। जो विनेगर होता है वो कैसा होता है, कलरलेस होता है। अब देखिए it turns into red by adding the blue litmus solution, so it is an acid. अब हम इस विनेगर पे फेनोल्फथालीन टेस्ट परफॉर्म करेंगे. Let's take the vinegar. This is vinegar solution. So I am adding phenolphthalein. ये हमारा phenolphthalein है. I am adding it. There is no change in color. You can see on adding the phenolphthalein indicator there is no change in color. So acid से वो substance होते हैं जिनका color change नहीं होता है by addition of phenolphthalein solution. So we can say that this vinegar is an acidic substance. Vinegar is acidic. Now another material which is available, that is the baking powder. Now let's explain the acidic or basic character of the baking powder. This bowl contains baking powder. So that is sodium hydrogen carbonate. Let's make the solution of this baking powder. So students, this is the solution of baking powder. अब हम इस बेकिंग पाउडर सॉल्यूशन का एसिडिक या बेसिक नेचर डिटेक्ट करेंगे. सो लेट अस परफॉर्म द लिटमस टेस्ट. दिस इज आवर रेड लिटमस. ये हमारा रेड लिटमस है. लेट्स पुट रेड लिटमस इनटू द बेकिंग पाउडर सॉल्यूशन एंड ऑब्जर्व इट्स कलर. कैसा हो गया, ब्लू. सो वी कैन से दैट द बेकिंग पाउडर सॉल्यूशन हैज द प्रॉपर्टी टू चेंज a red litmus paper into blue. So hence it is a base. Now let us see the effect of blue litmus on the baking powder. There is no change in color. It remains blue. ये थोड़ा lightish blue है. It remains blue. So we can say that this baking powder solution is basic in nature because it do not have any effect on the blue litmus paper, whereas it turns the red litmus into blue. Now in order to validate its basic nature, let us put the red litmus solution in it. So this is our red litmus solution. This is our red litmus solution. जब मैं red litmus इसमें डाल रहा हूँ, it's turning into blue. आप देख सकते हो, it's turning into blue. So you can
आप इसको देख भी सकते हो. So baking powder solution has turned into blue on addition of red litmus solution. So therefore baking powder is basic in nature. अब हम इस baking powder पे phenolphthalein test perform करेंगे. Now let's perform phenolphthalein test. So this is our baking powder. This is baking powder solution. So अब मैं इस baking powder solution में phenolphthalein indicator add कर रहा हूँ. So this is our phenolphthalein indicator. Now I will add it to the baking powder solution. So I am slowly adding this phenolphthalein indicator to the baking powder solution. So आप इस कलर चेंज देख सकते हो. So you can observe the change in the color of the baking powder solution. पहले ये बिल्कुल colorless था. Now it's turning into the pink. अब ये little pink हो रहा है, गुलाबी हो रहा है. So we can say that this baking powder solution turns into pink on addition of the phenolphthalein indicator. Hence, this baking powder solution gives the pink end point which the bases give. So this baking powder solution is a base. So like detergent solution, baking powder solution is also a base. So अब हमारे चार materials हो गए, that is the lemon juice, this vinegar and detergent solution and the baking powder solution. अब हमारा last जो material बचा है, that is the salt. So let us perform this litmus and phenolphthalein test on the common salt. This is our common salt. जैसा कि मैंने पहले ही आपको बोला था कि this bowl contains the sodium chloride, that is common salt. So we will perform the litmus and phenolphthalein test on this common salt solution. Let's make the solution of this common salt. So this is common salt solution. So let's observe whether it is acidic or basic by the help of litmus test. पहले हम इसमें red litmus indicator use करेंगे. So this is our red litmus indicator. Let's use this in the common salt. So it means that by putting the red litmus indicator in the common salt solution, the red color of the red litmus persists. So red color change नहीं हो रहा है. So hence the color red litmus do not change its color in the sodium chloride solution. So there is no change in the color of the red litmus. So hence we can say that the sodium chloride solution has no action on the red litmus indicator. अब हम blue litmus पे इसका टेस्ट करते हैं. Let's make the solution of sodium chloride again. अब हम इस पे ब्लू लिटमस टेस्ट परफॉर्म करेंगे. सो चलिए हम अब इसमें ब्लू लिटमस डालते हैं. अब देख सकते हो मैं ब्लू लिटमस डाल रहा हूं. देयर इज नो चेंज इन द कलर ऑफ ब्लू लिटमस. The solution remains blue.
देखो, you can observe this here. So there is no change in the color of the blue litmus indicator in the sodium chloride solution. Hence we can say that neither this sodium chloride solution changed its color by addition of red litmus, nor this sodium chloride solution changed its color by addition of blue litmus. So this solution have no effect on the blue litmus and the red litmus indicator. Hence this substance is a salt, because salts have no effect on the litmus test. So we can say that the sodium chloride solution is neither acidic, because neither it turns blue litmus solution into red, nor it is basic, क्योंकि इसने red litmus को भी blue में convert नहीं किया. Hence we can say that this sodium chloride solution is a salt. So now students, अब हमारे पास जो 5 मटेरियल्स थे, अब हम इन 5 मटेरियल्स की क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दीज टेस्ट्स. So let's now arrange these materials into acids, bases and salts. हम अलग अलग कैटेगरी बना रहे हैं. So first one is lemon. जैसा कि आपने ऑलरेडी लिटमस टेस्ट और फिनाफ्थलीन टेस्ट से ये परफॉर्म किया है कि लेमन इज एसिडिक इन नेचर. सो इसको मैं यहां पे रख रहा हूं, इट इज एसिड. अब इन मटेरियल्स में और कौन एसिड है? This is the baking powder, it is base, sodium chloride is salt, vinegar is an acid. So I will put vinegar because it is acidic as per the litmus and phenolphthalein test. I will put it along with the lemon. So this category contains the acids. So जो lemon और vinegar है, it is group A and the group A comprise of acids. Now second group जो है मैं bases का बना रहा हूँ. Among these materials, this detergent powder is basic, as we have already confirmed by the litmus and the phenolphthalein test. So I will put it here, it is the base. और अब जो दो बाकी मटेरियल्स बचे हैं, that is sodium chloride and baking powder. इनमें से baking powder base है as per our testers. So I will put it along with the detergent powder. So this is our category number 2. Group 2 contains bases and there are 2 bases, that is baking powder and detergent. Now जो ये left out salt यहाँ पे बचा है, this is sodium chloride. It is neither acidic nor basic, so I will put it in the category number 3. So category number 1 contains acid, that is vinegar and lemon. Category number 2 contains bases, that is detergent powder and baking powder, whereas the category number 3 contains salts, that is sodium chloride solution. So I hope कि आपने इस प्रैक्टिकल वर्क को एंजॉय किया होगा, क्योंकि साइंस इज द सब्जेक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट. साइंस का मजा तब होता है जब हम कोई चीज ऑब्जर्व करें. चलिए, जैसे कि हमने इस टेस्ट में ग्रुपिंग की एसिड्स, बेसिस और साल्ट्स की, या हम डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस लैब्स में स्टडी कर पाते हैं. ये एक्चुअली एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन था अबाउट एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स. आई होप कि थोड़ी से ज्यादा आपने इस प्रैक्टिकल वर्क में एंजॉय किया होगा. सो एट लास्ट मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप मेरी यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद सजाद सर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे. थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे. साबुन में